एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल कॉमर्स लर्निंग क्लासेस में। और आज का टॉपिक होगा बिजनेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस का मीनिंग, वो सब आज हम लोग डिस्कस करते हैं। बिजनेस और नेशन सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स चैप्टर 1 है। So let's start. Every human is busy in one or other activity to satisfy his needs. नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बिजी होते हैं एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटी में। ठीक है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जैसे कि होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, चलो देखते हैं। Economic activity are those activities which human perform to earn livelihood, जो कि livelihood के लिए perform किया जाता है। जैसे कि for example, a worker is working in a factory, a teacher is teaching in the class। ठीक है। और वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर अर्निंग मनी। यहाँ पर मोटिव अर्निंग मनी नहीं रहता है, बट आउट ऑफ लव, पैट्रियटिज्म, केयर, ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन डिनोट्स फॉर पीएम केयर्स फंड, हाउसवाइफ परफॉर्मिंग डोमेस्टिक वर्क, अ यंग मैन हेल्पिंग द ब्लाइंड मैन टू क्रॉस द रोड। तो ये हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बेस्ड होता है ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट, वाइल जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस पर बेस्ड होता है। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि होता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में ये सभी चीज़ आ जाता है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट का। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और वही प्रोफेशन में आपका हो जाता है। प्रोफेशन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स to be applied by individuals in their occupation। while employment का हो जाता है कि employment refers to occupation in to which people work for others and get remuneration in return। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस एक्टिविटी हैज़ बिन conceptualized by many business professionals and business managers ever since business emerged. Therefore, the concept of business has changed over the years of history of business. Till now, following concept of business had been emerged. Number one is profit oriented concept, customer oriented concept, and the societal or modern concept. Let us see this in detail. Number one, profit oriented concept. Profit oriented concept कहता है कि earlier business was looked to be a wealth producing activity। पहले business को wealth producing activity माना जाता था। Any human activities which is directed towards creation of wealth or earning profit through production or sale of goods was treated to be business। दीज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिहेवियर और माइंडसेट, इसी को मतलब कहा जाता था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अकॉर्डिंग टू दिस ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस वी कैन से बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस। इन दोज डेज द ओनली ऑब्जेक्टिव बिजनेस वॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट था। नंबर टू,
customer oriented concept. Customer oriented concept came into existence around 1950s, but it was popular during 1960s and 70s. Business owners began to think about customer service and satisfaction. They started thinking that business should be done for mutual benefit of both businessmen and customers. More and more importance was attached to customer satisfaction. It was realized that business should earn profit in the long run only if customers are satisfied. Societal और मॉडर्न कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड ये कहता है कि ड्यूरिंग द 1980s the societal concept of business began to emerge. People started criticizing customer oriented concept. These old customer oriented concept of business was criticized because it focuses only on profit maximization. मतलब इसको इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ही फोकस करता था थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर कस्टमर नो मैटर वेदर इट फुलफिल्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट. The modern concept of business consider a business as a social and economic institution and not a profit institution which has some some social responsibility towards society. Now, future of business. Business is an economic activity, exchange of goods and services, continuity of dealings, uncertainty of or risk, profit motive, capital investment, customer satisfaction. Stages of business development. We all know that starting business operation and developing them is not a easy task. ये easy task नहीं होता है. Every business, whether it's big or small, goes through the four stages of business growth, जैसे कि startup, फिर growth, फिर maturity, फिर renewal और decline. ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है. Classification of business activity. Business activity can be classified into two broad categories, that is number one industry and number two commerce. Industry is an economic activity concerned with the procurement and processing of raw materials into finished goods that reaches the customer. और वही कॉमर्स में हो जाएगा. कॉमर्स इज अ बिजनेस एक्टिविटी वेयर इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू इज डन. जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, ठीक है, फॉर वैल्यू. The term industry refers to the production of goods and services by means of raising production, processing, fabrication, construction or manufacture. Industry is subdivided into five broad categories. Number one, extractive, genetic, construction, manufacturing, ये सब ठीक है. Number five, service industry. अब कॉमर्स क्या होता है? द सेकेंड ब्रांच ऑफ बिजनेस इज कॉमर्स विच इज कंसर्न विद द एक्सचेंज of goods and services between producer and customers. It bridges the gap between producer and consumers and remove hindrances in the process of exchange. It consists of trade and auxiliaries to trade. इसमें दोनों आ जाता है, ठीक है. इंटरनल ट्रेड भी होता है, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है. Auxiliaries to trade. Activity which are meant for assisting trade are known as auxiliary to trade. ठीक है. Evolution of business organization.